Assalamu alaikum, good morning. Once again, warmly welcome to my all dear students, 7A and 7B. I hope now time you are enjoying one of the best time at your home because it's one of the good thing to stay at home and enjoy a good health and as well enjoying the different benefits too. But it's time for your study time. ये time है आपका study का, पढ़ने का और रूटीन के हिसाब से आप लोगों की जैसे गूगल क्लास हम लोग लेते हैं और यूट्यूब चैनल पे हम लोग आपके लेक्चर्स को अपलोड करते हैं. आई होप नाउ टाइम माय ऑल स्टूडेंट्स एंजॉयिंग देयर लेक्चर, इंग्लिश लेक्चर, social studies lecture and get more information regarding their comprehensions, okay, and different other tasks too. Okay, it's time to be once again reconnect the connection. Last time जैसे हमने जहाँ drop किया, that was the time we read about the folk tale. If you still remember in the previous two lecture, you read about the folk tale. Folk tale, I can be properly brief you about the structure, about the elements, about the motives, about the structures, about the different motives, elements and strategies regarding folk tale. Okay, it's one of the good thing that once again we discuss about a folk tale. Okay, first one, open your books, unit number 2. Okay, it's a textbook, page number 20. Open your textbook, page number 20, and today's topic is the three precious packets. The three precious packets. Okay, I repeat the topic once again, unit 2. Okay, the topic is the three precious packets. Okay, and this is one of the good story and very interesting story based on folktale. And once again, reconnect your mind, reinforce your mind regarding the folktale. What's mean by the folktale? Folktale एलिमेंट्स क्या हैं, मोटिव्स क्या हैं. मैंने आपको ग्रुप में भी उसके फोकटेल्स के जो स्टैटिस्टिक्स पॉइंट्स थे वो डिस्कस किए थे और उनको मैंने आपको आउटलाइन उसका दिया था. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ यू वांट टू नो फर्दर अबाउट द फोकटेल, more information and information regarding their more interesting ways, you take a necessary help from your resource pack too. क्योंकि resource pack में भी difference between a folktale and a fable, number one. Number two, how can you capable to write the folktale? मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने खुद से भी कोशिश करनी है कि आपने जर्नल folktales जो आप लोग पीरियड माइनर क्लासेस में आप लोग रीड करके हैं, grade 2, 3, 4, 5 and 6 in the last class when you was in class 6. तो आप लोगों ने जो भी folktales पढ़ी हैं उर्दू and especially in English, अगर आपने उर्दू में भी पढ़ी है तो आपने उसको रीराइट करना है, रीराइट इन English, but in past tense, by using the past tense. We focus on past tense. Okay, my dear students, open your textbook, page number 20, and it's one of the most interesting and very informative story. Okay, I read it. Take your, once again, I repeat many times, take your colorful highlighter or lead pencil. When I ask to you, underline the difficult words, okay, difficult words for your dictation, your spell test, number one most important thing, and second, for your vocabulary work for the word meaning in Urdu and English reference to. Urdu meanings का या उर्दू ट्रांसलेशन के लिए फोकस क्यों किया जाता है ये भी बता दूं. इन द मीनवाइल, जैसे आप लोग इंशाल्लाह ताला अपनी ग्रेड 8 में जाते हैं, हमारे पास two mediums होते हैं, one is O level and another is in the metric scheme. So O level students must be prepared for the thorough in English, be capable on strong grip, strong handling in English, in different article writing, report writing, whatever. So the strategies regarding the O-level syllabus. Okay, what about the metric student? Metric students more capable handling on tenses, structural grammar, translation, English into Urdu or Urdu into English, grammar structure, active passive, direct indirect. एक बहुत स्ट्रीम मल्टीपल उनके पास टॉपिक्स होते हैं जो उन्होंने अपनी मैट्रिक स्कूलिंग के दौरान इंजॉय करने होते हैं इन ग्रेड 8, इन ग्रेड 9, इन ग्रेड 10. ओके, 3 ईयर. इस तरह जब बच्चे ओ लेवल्स पे आते हैं उनके लिए एक स्पॉन्टेनियसली लिखने का एडवांटेज होता है. क्रैमिंग नहीं, क्रैमिंग इज बैड थिंग. मैं हमेशा अपने तमाम स्टूडेंट्स को स्नैप करता हूँ, क्रैमिंग इज अ बैड थिंग. आप चाहे एक पैराग्राफ लिखें, आप चाहे एक सेंटेंस को 10 दफा तोड़ मरोड़ के लिखें, उसको जंबल कर दें, लेकिन बस हमेशा सोचें फर्स्ट वन प्रिफर टू हाउ टू यू आर कैपेबल टू राइट योर पर्सनल थिंग्स, अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स को, थिंग्स को कैसे लिखते हैं आप. आपकी डायरी एंट्री है, जर्नल है, रिपोर्ट है, स्ट्रक्चर राइटिंग है, ईच एंड एवरीथिंग इज इन योर सिलेबस. तो आज की हमारी स्टोरी स्टार्ट करते हैं. ओके, टेक योर हाइलाइटर और लेड पेंसिल इन योर हैंड एंड प्रॉपर्ली अंडरलाइन द वर्ड्स और स्ट्रक्चर, ईडियम जो भी मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ. ओके माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वंस अगेन स्टार्ट. A poor student, okay, a poor student whose name was New.
was once traveling to the capital city for appearing in examinations. Okay, examinations mean imtahanat. He decided to stay overnight in a village inn. What's mean by the village inn? अब लिटरली अगर अपने माइंड में आप लेके आए कि आपने सिक्स में मुगल हिस्ट्री को पढ़ा, you read about different Mughal emperors. Okay, you read about Sher Shah Suri. Was Sher Shah Suri. Okay, कौन था? Was Sher Shah Suri. Okay, आपने पढ़ा कि इसके डिफरेंट रिफॉर्म्स थे, उसने डिफरेंट बैटल में, वॉर में बहुत अच्छी अचीवमेंट्स की, रिसोर्सेज बनाए, पोस्टल सर्विसेज को उसने अच्छा स्ट्रांगली ग्रिप किया, आर्मी को उसने अच्छा हैंडल किया. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि उसने बे ऑफ बंगाल पिशावर टू डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल टू डायरेक्ट पिशावर तक उसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनाया. और उस दौर में उस ग्रैंड ट्रंक रोड जो है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एस्टैब्लिश उसने किया, एक बहुत ग्रेट उसका नेटवर्क बनाया. लेकिन उसके साथ उसने उसके ड्यूरिंग मतलब जो भी ट्रैवल करता था, ट्रैवलिंग के दौरान इन्स बनाए. इन्स कहते हैं सराय को, स्टे प्लेस होती है. जैसे सपोज अगर आप लोग मोटरवे पे जाएं तो डिफरेंट रिसोर्सेज आते हैं जहाँ पे आप लोग स्टे लेते हैं, पेट्रोल पंप होते हैं, होटल्स होते हैं, स्टे होता है, आप लोग अपने चेंज करना होता है, कुछ चीज़ें अपने कुछ बाय करना होता है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं. तो वहाँ पे आपको एक स्टे प्लेस मिलता है, रिमेन स्टे प्लेस होता है. देयर जस्ट टू स्पेंड 1.5 टाइम. ओके, वन नाइट स्टे भी हो सकता है. होटल्स होते हैं, जनरल वर्ड्स में आप इसको एक मॉडर्न होटल कहते हैं. इवन यूरोप में, लंदन में आप चले जाएं तो वहाँ पे इन्स बहुत आपको देखने को मिलते हैं, स्पेशली इन रीजन एरियाज, स्पेशली इन टाउन्स एंड डिफरेंट other places. Okay, this boy name is New. Okay, once again I read. A poor student whose name was New was once traveling to the capital city for appearing examination. एक गरीब लड़का है, बेचारा लाचार है, पुअर है, ठीक है, और उसके एग्जाम्स हैं. उसने ट्रैवल किया कैपिटल सिटी से फॉर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन. इम्तहानात की तैयारी के लिए उसने इम्तहान में अपीयर होना है, कि है और उसने कैपिटल सिटी से ट्रैवल किया. He decided to stay overnight in a village inn. Okay, take a decision कि उसका कमिटमेंट होता है कि उसने village inn में stay करना है. One night he wanted to remain still in village inn. Okay, I tell you about the village inn. It was the depth of winter. Winter season जब आता है, especially in European countries, it's totally deeply depth of winter. Each and everything is totally silvery, snowy. Mean like you just watched the movie Frozen. Totally ice is covered with land is covered with ice. Snow glaciers. Okay, snow fell steadily from a leaden sky. Just to watch this picture. This is the picture one of the resource for you. Okay, it's a aerial view. Okay, a front of views of different houses. At the back there is a lake or a river or a lake. There's one, I think so, church and other things. All the bushes, trees are covered with the snow. Snowy things covered all of them. Okay, bitterly cold. मौसम ऐसा था, सर्दी से शदीद सर्दी थी और हर तरफ जो था वो स्नो था, बर्फ थी. bitterly cold थी, शदीद बर्फ, bitterly cold थी. Snow fell steadily from a leaden sky. Okay, New rejoiced in the warmth and comfort inside the inn. Obviously, अब जब इन के अंदर आप जाएं, सर्दियाँ और डिफरेंट होटल्स होते हैं, उन्होंने एग्जॉस्टेड वेज यूज़ किए होते हैं अपने होटल में. उन्होंने अपने जो ट्रैवलर्स होते हैं उनके लिए उन्होंने अच्छे इंतजाम किए होते हैं. उनके लिए उन्होंने हीटर्स का अरेंज किया होता है. और आजकल आपको पता है हीटर जो होते हैं वो इनसाइडली सीलिंग के अंदर इतने अच्छे मतलब पर्पस में उन्होंने उनको लगाया होता है. ओके, जब ये लड़का न्यू होटल इन में मतलब विलेज इन में चले जाता है, वहाँ तो उसको कंफर्ट्स मिलते हैं. ऑब्वियसली ये बहुत सर्दी का मौसम होता है और ये जब अंदर जाता है तो चारकोल, अक्सर आप देखें सर्दियों में लोग जो होते हैं, स्पेशली जो ये ट्रैवलिंग एरियाज में आप लोग जाएं या नॉर्थन एरियाज में आप देखें तो लोग क्या करते हैं, चारकोल या वुडन पीसेस को लेके या बुशेस को लेके तो वो आग लगा लेते हैं किसी एक लोहे के कंटेनर में. कंटेनर लेते हैं, उसके अंदर वो लोग वुडन पीसेस डाल लेते हैं, कोयला डाल लेते हैं और उसको आग लगा लेते हैं. उसके इर्द गिर्द वो लोग बैठ जाते हैं और खुद को वार्म करते हैं. ठीक है, अब ये सिचुएशन ऐसी है, मैं दोबारा पढ़ता हूँ. New rejoiced in the warmth and comfort inside the inn.
He sat toasting himself before a charcoal. Charcoal किसको कहते हैं? वैसे तो ये वर्ड होता है जैसे कोयला हम लोग कहते हैं, ठीक है। चारकोल वर्ड होता है, कोयले में आ जाता है। या जैसे अक्सर ये लड़कियां चारकोल को यूज करती हैं लाइनर वगैरह बनाने के लिए, पेंट में यूज होता है, आपके आर्ट में यूज होता है, इससे अदर पर्पस। बट हियर डिस्कस दैट चारकोल इज अ PRAZIER and ordered hot soup. Okay, obviously जब वो वार्म फील करता है तो उसके साथ ही वो ऑर्डर करते हैं कि आई नीड अ हॉट सूप, आई नीड अ हॉट सूप। आपको पता है सर्दियाँ जब आती हैं तो डिफरेंट हमारे ईटेबल स्टफ्स होते हैं जो हमें वार्म अप करते हैं। एनर्जी ड्रिंक्स हो सकते हैं, वो आपके फूड ईटेबल स्टफ होता है, ड्राई फ्रूट्स आप लोग लेते हैं, सूप पीते हैं आप लोग, ग्रीन टी लेते हैं, कावा पिया जाता है, कॉफ़ी ली जाती है। इसी तरह वो ऑर्डर करता है हॉट सूप का, ओके। एंड डम्पलिंग फॉर हिज सुपर कहा जाता है रात के खाने को, ओके। वाइल वेटिंग फॉर द फूड टू अराइव, जितनी देर तक वो उस खाने का वेट करता है जो उसने ऑर्डर किया है, ओके। ही ड्रोव द chill फ्रॉम इनसाइड हिम विद अ बाउल ऑफ हॉट टी, ओके। वो एक हॉट जैसे अक्सर आप देखिए विलेजेस एरिया में जाए, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो विलेजन एरिया से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने देखा होगा विलेज में रहने वाले जो लोग होते हैं ना, उनका एक टिपिकल ट्रेडिशन होता है, ओके। वो कप में चाय पीना जो वो प्रेफर नहीं करते, वो एक जिसे कहते हैं सैरेमिक बाउल होता है, मतलब जिसे हम कह सकते हैं प्याली कह सकते हैं या प्याला कह सकते हैं चाय का, तो वो लोग उसमें पीते हैं, बाउल ऑफ हॉट टी। वो ये लेता है, उससे खुद को चिल करता है, वार्म अप करता है, बड़ा एंजॉय करता है। सोनी फेल्ट अ प्लेजेंट ग्लो, ओके। ज़ाहिर है कि एक आप लोग फील करेंगे, आप अगर सर्दियों में अगर आपने शावर लिया है और शावर लेने के बाद अगर आप अपने आप को हीटअप करना चाहते हैं, तो मेजोरिटी बच्चों में ये होता है कि उनके पेरेंट्स उनको आई थिंक सो कि 1 हॉट कप ऑफ टी, कॉफ़ी और 1 ग्लास ऑफ मिल्क, ओके, बॉइल्ड मिल्क देते हैं। और अगर आप उसके साथ के एग लें, बॉइल्ड एग लें, तो फ़ौरन आपका जो टेम्परेचर है, आपका बॉडी का टेम्परेचर बड़ा कूल जो आपको फील हो रहा होता है वो चिल हो जाता है। यू फील वार्म, you feel hot, okay, feel so much comfortable, okay. The question is why question मैंने आपको बताया था जैसे आपकी रीडिंग में आए, आपने उसका क्लू, you take a necessary from the word bank, hint, clue, and most important thing the target which is be required, okay. The question is what word in the first sentence suggests a folk tale opening. folk tale की opening कैसे होती है? Obviously आपको पता होना चाहिए like once upon a time, once a day, once upon a time, but you just mention only once. It's an opening for a folk tale, beginning, folk tale, opening, okay. The next page number 21, my dear students, just come on the page number 21. Okay, the paragraph 2, the pre-winter daylight was almost gone when a man knocked on the door and was admitted stumbling into the inn. He was a poorer than you. Okay, अब एक दरवाजे पे दस्तक होती है, विलेज इन के जो मेन दरवाजा होगा उस पे कोई नॉक करता है, okay, and just want to permission to come inside, okay. The man which is all of a sudden which was come to inside the village inn through village inn store, okay, he was poorer than you, यानी उसकी कंडीशन इतनी पुअर थी, ओके, सेकंड डिग्री यूज की है, पुअरेस्ट होता है, पुअरर देन न्यू, कि वो न्यू से भी ज्यादा पुअर था। क्या कंडीशन थी? चीप था, पैथेटिक था, उसके कैसा डिस्क्रिप्शन था, जस्ट रीड इट वेरी केयरफुली। हिज क्लॉथ्स वर ऑलमोस्ट थिन, उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो इंतहाई पतले थे, बारीक थे, सी थ्रू उसने ड्रेस पहने हुए थे, एंड कॉटन ड्रेस यानी कि चीथड़ों में मलबूस, यानी ऐसे कपड़े अक्सर देखिए जो गरीब और लाचार लोग होते हैं, ये बैगर कम्युनिटी होती है, तो उन्होंने ऐसे कपड़े पहने होते हैं जो बिल्कुल फटे होते हैं, वो सीधा होते हैं, जगह जगह से उन पे वो पैमक लगी होती है, उनके ऊपर कलरफुल उन्होंने पैच लगाए होते हैं, ठीक है। विच वॉज नो प्रूफ कहते हैं सबूत को, ठीक है, अगेंस्ट द कीन वेदर। हिज चीक्स कहते हैं गाल को, रुखसार को। हिज चीक्स वर पिंच्ड, सर्दी से आप लिखते अगर आपने स्वेटर या कोट या इनर कोट या इनर कोई ब्लाउज या अपने ऊपर कोट या इनर कोट या ऊपर ओवरकोट ना पहना हो, तो एकदम सर्दी आपको ज्यादा लग रही हो, तो आपके जो रुखसार होते हैं या हमारे चीक्स होते हैं बिकम रेडर,
और ये पिंच्ड हो जाते हैं सर्दी से। अगर शदीद सर्दी हो तो जो गाल है ना वो बिल्कुल फ्रोजन फील हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि उनके अंदर टाइटनेस आ जाती है और वो पिंच्ड हो जाते हैं। एंड यू मूव स्विफ्टली, ये उसने एक टर्म बताया उसके आहिस्ती से चलने को, एज हाफ फ्रोजन। ज़्यादा सर्दी ज़्यादा थी जैसे ये पिक्चर में, जस्ट टू वॉच दिस पिक्चर सोर्स, तो दैट्स वाई अगर वो बाहर खड़ा था तो उसको सर्दी कितनी लग रही होगी कि उसके जो बॉडी का टेम्परेचर था, जिसम का पूरा फिजिकल टेम्परेचर, उसका जो अपीयरनेस था जब अंदर वो आया, उसकी चीक्स, उसकी बॉडी ट्रम्बल कर रही थी, उसकी आइज बिल्कुल फ्रोजन हुई थी, स्टियर थी, ओके, उसके लिप्स बिल्कुल जो थे वो फ्रोजन हो गए थे, ही कांट एबल टू स्पीक। और जैसे अगर सर्दी ज़्यादा हो तो शिवरिंग शुरू हो जाती है, दांत जो है वजने लग पड़ते हैं, ठीक है। फिर लिटरली नीम गर्म पानी पिए, लिटरली हॉट वाटर लें या कोई ऐसी चीज़ लें जिससे आपका टेम्परेचर बैलेंस होता है, तो टीथ की जो कैविटी होती है ना वो फौरन जो आपकी बार बार यानी वाइब्रेट हो रही होती है, थरथराहट उसमें आ रही होती है, वो कम होना शुरू हो जाती है, ओके। हिज लिप्स वर टू नम टू अलाउ हिम टू स्पीक। उसके होंठ भी इतने ज़्यादा सर्दी से इस कदर ज़्यादा ठिठर रहते हैं कि इस कदर ज़्यादा फ्रोजन हो रहे थे, he can't able to say something, he can't able to speak something। बहुत जेंटली वो प्रोसीड कर रहा था जो कहना चाह रहा था, but he cringed before new, obviously pleading to be allowed to share, इल्तिजा की, रिक्वेस्ट की, that may I come in, please you may allow me to come inside to share the warmth of the weather। मुझे भी मौका दें कि मैं अंदर आऊँ और ये जो आप गर्म मतलब उस अंगीठी के गिर खुद को इतना वार्म अप कर रहे हैं, तो आई नीड also need to get your first one permission to come inside, and if you allow me to come inside, then I may take seat with you। New quickly made a place for him। New ने फौरन उसके लिए एक जगह बनाई। It's an act, one act, permission उसने मांगा, उसको अंदर आने का मौका मिला। It's a one good thing, one thing for the good kindness। Other कि उसने उसको अंदर आने दिया, ठीक है, और उसके लिए प्रॉपर जगह दी। मे बी ऐसी स्ट्रैटेजी होगी इस वक्त उसने खुद अपनी जगह छोड़ दी, खुद एक साइड पे बैठ गया, ज़मीन पे बैठ गया, कारपेट पे बैठ गया, और उससे उसने एडवांटेज दिया, तो टेक माय सीट, ओके, वार्मली वेलकम। एंड द मैन स्क्रैच हिज हैंड्स, मैन स्क्रैचेस है, स्क्रैच हिला लेना, उसने अपने हाथों को फैलाया, easily towards the glowing charcoal and began to thaw out gradually। It's a one good thing। The landlord, paragraph number 4, the landlord जो उस विलेज इन में, इन का लैंडलॉर्ड था, इन सराय का लैंडलॉर्ड, मालिक जो था उस जमीन का, ब्रॉट न्यूज स्वीपर, वो उसका जो उसने ऑर्डर किया होता है रात के खाने का वो लेकर आता है। एंड द स्टीम, दार एक फ्रेश खाना था, ठीक है, और जो सारे सर्दियों में अक्सर देखें जब फ्रेश खाना बनता है अच्छे किसी होटल में जाएं तो उसकी एक बड़ी फ्रेगनेस होती है, फ्रेगनेस स्टीम उसमें से निकल रहा होता है, और उसकी स्मेल बहुत फ्रेगनेस जो है आपके नॉस्ट्रल्स को कैच करती है, ब्रेन को क्लिक करती है, एंड यू फील सो हैप्पी एंड कूल टू ईट योर फूड ड्यूरिंग द विंटर टाइम, ओके। द स्टीम फ्रॉम विच tickled the nostrils, the front portion from your nose, from right and left side, ये जो लतने होते हैं या एयर होल्स भी कहते हैं जो आपके अल्लाह ताला ने हमारे नोज के बिल्कुल फ्रंट पे बनाया है, विद अ डिलीशियस स्मेल, उस डिलीशियस स्मेल जो है उमदा लजीज स्मेल से फुल फ्रेगनेंस जो है उसको कैप्चर करती है उस खाने की। Then he turned to the wretched newcomer and asked what he could do for him। फिर जैसे वो टर्न लेता है उसको ऑफर करता है, उसको यानी कि वो जो पुअर न्यू है उसको ऑफर करता है। पैराग्राफ 5, अ बाउल ऑफ टी, जो मैंने पहले बताया कि बाउल ऑफ टी एक चाय के प्याला जो होता है जो वो पी रहा था, जो उसने सूप का जब ऑर्डर दिया तो सूप के ऑर्डर के बाद उसने प्याला जो था, चाय अभी आया नहीं था तो उसने खुद को चिल करने के लिए चाय का एक बड़ा प्याला था, उसने उसको ऑफर किया। एंड अ प्लेस ऑन द फ्लोर फॉर द नाइट, उस जगह को वहां पे रात गुजारने के लिए। सेट द मैन एंड द लैंडलॉर्ड वेंट ऑफ द फ्रेजल वर्क टू फेच द टी, उसको उसने कहा कि इसके लिए भी चाय लेकर, टू फेच अ टी, टू फेच अ ग्लास ऑफ वाटर, फ्रेश ग्लास ऑफ जूस और वाटर। न्यू वाज फिल्ड विद पिटी, रहम खाना, तरस खाना, फॉर द पुअर स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर का नाम नहीं पता, ओके। न्यू का नेम हमने स्टोरी में अब तक पढ़ा है, लैंडलॉर्ड का में आ गया है, कैरेक्टर जो हमने पढ़ा है, ठीक है। न्यू वाज फिल्ड विद पिटी फॉर दिस पुअर स्ट्रेंजर, न्यू जो है उसके दिल में स्ट्रेंजर के लिए, अजनबी के लिए, अननोन पर्सन के लिए फुल ऑफ पिटी है, तरस है, रहम है, क्यों है। He pressed on him his own super। नंबर थर्ड थिंग इज डिस्कस हियर कि उससे सबसे पहले तो जो उसको ओपनिंग में अंदर आने दिया, उसको अपनी जगह दी,
उसको वार्मली वेलकम किया, फिर टी दी, बाउल ऑफ टी दिया। अब जो खाना आया उसके साथ क्या उसकी अगली स्टोरी बनती है। When the landlord came back, okay, ordered more for himself. The stranger looked down. It's the phrasal verb. The soup and dumpling in no time at all. And New ordered noodles to follow. जो खाना आया, जो न्यू ने ऑर्डर किया था, न्यू ने उनको सर्व किया स्ट्रेंजर को, और इसी तरह न्यू ने नूडल्स का ऑर्डर किया कि आई नीड नूडल्स। नूडल्स आपको पता है, आप में से मोस्टली बच्चे जो हैं उसके खाते हैं, इंजॉय करते हैं, और नूडल्स का उसने ऑर्डर दिया, किसने? न्यू ने। ओके, पैराग्राफ 7, आई हैव नो मनी टू पे फॉर देम। मेरे पास से कोई रकम नहीं जो मैंने अगर ये खाना खा लिया या मैं खा रहा हूँ इसके देने के लिए। सेट द मैन, स्ट्रेंजर आदमी कहते हैं। न्यू इंसिस्टेड, न्यू वंस अगेन मोर टाइम इंसिस्टेड, उसको इसरार करता है, मजबूर करता है, दैट ही शुड एक्सेप्ट देम। ओके, डोंट वरी, ओके, शुड एक्सेप्ट देम, एंड इन नो टाइम 5 बाउल्स ऑफ नूडल्स had disappeared। वो कितना बेचारा भूखा होगा, कितना हंग्री होगा, या उसको कितनी भूख की तलब होगी कि एटलीस्ट ऑल फूड जो उसने पहले ऑर्डर किया था और उसके बाद नूडल्स जो उसने खाए वो एटलीस्ट उसने 5 बाउल खाए। चाइनीज ज़्यादातर जो नूडल्स खाते हैं ना, जापानीज एंड चाइनीज स्पेशली ये दो नेशन जो है वो बाउल में खाते हैं, क्योंकि उनका एक अपना कल्चर होता है और स्पेसिफिक उनका बाउल होता है, उसमें उसको बनाते हैं या उसमें वो सर्व करते हैं। एंड दे यूज चॉपस्टिक्स, वो चॉपस्टिक्स के थ्रू खाते हैं, स्पून या फॉर्क वगैरह नहीं लेते। ओके, इसलिए इस कहानी को पढ़ते हुए ध्यान में रखें ना कि ये किस कंट्री से कहानी है, यानी हम इसको टारगेट को डिस्कस करेंगे। एंड इन नो टाइम 5 बाउल्स ऑफ नूडल्स हैड डिसअपीयर्ड इन द वे द सूप हैड। ओके, व्हेन दे रिटायर्ड टू रेस्ट, अब टाइम खाने पीने के बाद रेस्ट का था, आराम का था, सुकून का था। न्यू ट्राइड टू गिव अप हिज ओन बेड फॉर द स्ट्रेंजर, वंस अगेन मोर गुड एक्ट। न्यू उस कमरे में, जिस कमरे में उसने स्टे लिया था, वो स्ट्रेंजर को कहता है कि दिस इज बेड, दिस माय बेड, जस्ट कम ऑन दिस बेड एंड स्टे हियर, स्टे वन नाइट विद मी। ओके, उसको ऑफर करता है कि मेरे बिस्तरे पे आप आए, यहाँ आके सो जाए, आप इधर आए, इंसिस्ट करता है, उसको ऑफर करता है। आगे क्या होता है? He lay down, but the man would not accept it। लेकिन आदमी, जो स्ट्रेंजर आदमी है, वो इसकी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता। He lay down on the floor, वो फर्श पे लेट जाता है, स्ट्रेट लेट जाता है। At the foot of the bed, जैसे ये बेड हो, बेड के नीचे बिस्तरा बिछाया होगा या कारपेट होगा या रग होगा, उस पे लेट जाता है, ठीक है। And slept immediately, slept, okay, past tense immediately, और फौरी तौर पे वो सो जाता है, उसको नींद आ जाती है। As if to prove reading के दौरान please I humbly request to my all students of grade 7 students, okay, whenever just to read the text, pay focus on reading text and enjoy the reading targets. Okay, what is the next in paragraph? What is the climax? What is the meanwhile story? What about the mid story? What is the ending of the story? Okay, then with the super he had eaten, past tense, he snored. Please underline this sentence, underline or highlight. He snored like a bull all through the night. अब snore कहते हैं खराटे लेना। जैसे अक्सर आप में से बच्चे होंगे, वो रात को ऐसे सोते होंगे, खराटे लेते होंगे, किसी भी लीला होते हैं कि बच्चे ऐसे। और अक्सर देखिए, मैं जैसे आपको बताऊं, बुल भैंसे को कहते हैं। स्पेशली स्पेन में अगर आप लोग ये बुल फाइटिंग का जो एक उनका इवेंट होता है, ठीक है, उसके अंदर बाकायदा तौर पर जो बुल होता है वो स्नॉर कर रहा होता है, स्नॉर खराटे ले रहा होता है, गुस्से से ले रहा होता है। और ऑल ऑफ सडन जब उसको उस ऑडियंस में, मैदान में लाया जाता है और उसको पीछे से ज़बरदस्ती बुल, पहले ये भी एक हिस्ट्री का पार्ट है, याद रखिए कि बुल ऑल ऑफ सडन अटैक नहीं करता, उसको गुस्सा दिलाया जाता है, उसको फिगस किया जाता है। कैसे? कि अक्सर उसको नीडल्स जो हैं स्पीयर के थ्रू पोक किया जाता है। अभी आई थिंक सो विद इन वीक पहले मैंने बड़ी अच्छी फिल्म देखी थी, उसमें बाकायदा ये सीन था, उसके अंदर बाकायदा जो बुल है वो फाइटिंग के लिए विलिंग नहीं होता, ठीक है, टेम बुल होता है, डोमेस्टिकेटेड होता है, तो उसको कैप्चर कर लिया जाता है, लेकिन उसको फोर्स किया जाता है। तो जब फोर्स किया जाता है उसके बावजूद भी नहीं, लेकिन ऑल ऑफ सडन वो जो टीम होती है, जो उन्होंने कॉस्ट्यूम्स रखे होते हैं, वो आके उसको ज़बरदस्ती स्पीयर या पॉक करते, नीडल लगाते हैं। सेम थिंग्स देयर, अंडरलाइन प्लीज, ही स्नोर्ड लाइक अ बुल ऑल थ्रू द नाइट। वो सारी रात ऐसे गहरी नींद सोता रहा
और भैंसे की तरह, बुल की तरह खरा खरा खराटे लेता रहा. अंडरलाइन प्लीज. ये सिमिलीज है. ओके. नंबर 8, एज डान. डान कहते हैं सुबह की रोशनी, सुबह की लाली, सुबह का फूट उठना. जैसे फजर की नमाज जैसे होती है ना, उससे पहले जो वक्त होता है उसको डॉन कहा जाता है. डॉन न्यूज़पेपर भी है, डॉन बेकरी आइटम्स भी अवेलेबल होते हैं सुबह के वक्त जो एंजॉय करते हैं विद अ कप ऑफ टी इन ब्रेकफास्ट टाइम. ओके. एज डॉन वाज ब्रेकिंग, न्यू वाज ब्रॉट इनटू अ wakefulness by someone gently shaking his shoulder. अब सुबह का वक्त होता है, ठीक है, यानी कि सुबह मॉर्निंग टाइम से पहले someone touched the shoulder of New when he was deeply sleeping. Okay, उसके shoulders के कंधे को कोई टच करता है, शेक करता है, हिलाता है. It was a stranger, ये वो अजनबी था, who's gazed at him. gaze कहते हैं गौर से देखना, बहुत टिकटिकी से देखना, बिल्कुल उसको ऑब्जर्व करके देखना, आंखों में आंखें डाल के देखना. At him with eyes full of affection, लेकिन उसकी आंखों में affection थी, a deep affection, a deep love, deeply love, deep affection. Why? Please come outside with me. And the stranger asked to the new to please come with me, please come outside. He said, I have something to say to you. I had something to say to you. Stranger said. Paragraph number 9. Okay. Wonderingly, New pulled on his boots and followed the man out of the door of the inn. And once again, he followed one by one, take a step, one step, two step, and come outside the door, the inn. The cold grey light, the cold grey light. Okay, grey light, grey color को कहते हैं सुरमई या खस्तरी रंग की जो रोशनी होती है उसमें. The stranger turned to him and said, stranger said, please underline this line, I'm not a human being. मैं इंसान नहीं हूँ, but please underline this line and underline the meaning too. I'm a messenger, a good messenger from the God. अल्लाह ताला की तरफ से मतलब भेजा हुआ एक मैसेंजर था, पैगाम रसा था, एंजल कह सकते हैं. उसने क्या कैसे खुद की अपनी अपीयरेंस को शो किया. ओके, फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड. ओके, अंडरवर्ल्ड वो अपना इंट्रोडक्शन बताता है. ओके, सीइंग न्यूज़ लुक्ड ऑफ फियर ऑफ डर. सारे जब इंसान ऑल ऑफ सडन किसी इंसान को एक रूप बदले देखेगा, उसका चेंज डिस्क्रिप्शन देखेगा, he become fearful, उसको डर लगेगा. he added hesitantly, हिचकिचाते हुए, ठीक है, stumble होते हुए, do not worry, I have not come for you, okay, but I am very grateful for your kindness. It's one of the good thing. Please underline, but I am very grateful for your kindness to me last night. अब उसने उसकी जो काइंडनेस थी, उसकी मेहरबानी जो थी, नवाजिश थी, उसका बहुत भरपूर एक अच्छे तरीके से शुक्रिया अदा किया. और नीचे मेंशन है लास्ट नाइट, जो उसने गुज़िश्ता रात की थी, क्योंकि नेक्स्ट डे नया दिन शुरू हो गया था, डॉन टाइम था. और जैसे उसने उसको शेक किया, आस्क्ड हिम टू कम आउटसाइड द डोर, वो बाहर आया और उसके बाद उन दोनों के दरमियान ये बात हुई. This is the one of the good and interesting folktale. I hope my all dear students enjoy it and personally read it once again. Okay, please take your pencil or a highlighter to underline the difficult words. First one word is capital city, traveling. Once again I read it in the paragraph 1. Paragraph 1, traveling, capital city, appearing, examinations, okay, overnight, depth of winter, bitterly cold, within sky, steadily, warmth, joist, comfort, charcoal, dumplings, pleasant glow. Paragraph 2, admitted, cotton rags, proof, pinched, P-I-N-C-H-E-T, half frozen, numb, N-U-M-B, numb, obviously, O-B-V-I-O-U-S-L-Y,
pleading. Okay. Paragraph 3, agily, glowing, gradually. Paragraph 4, stain, newcomer. Paragraph 5, fetch, to fetch, to fetch, landlord. Paragraph 6, filled, filled. Wolf, noodles, 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 double O. Paragraph 7, insisted, disappeared, retired. Okay, immediately, snore, proof. पहले आपने प्रूफ पढ़ा था, PROOF, ये प्रूफ है, PROVE, साबित करना, SATISFACTION, dawn, DAWN in paragraph 8, gently, GENTLY, affection, AFFECTION, wakefulness, 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 gazed, GAZED, stranger, 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 STRANGER. Okay. Paragraph 9, wonderingly, wonder से adverb है, wonder adjective है. Okay. Human being, and why? Fear, underworld, hesitately, grateful, grateful. Okay, my dear student, this is the end of the story. Okay, while reading question, how can we tell the stranger will be important in the story? How can we tell the stranger will be important in the story? Okay. In my point of view, the supernatural has been introduced in the story. Many times you just watch the different movies on HBO, Star Movies, okay, Filmax channel. These channels many times, okay, telecasted different movies. On different movies there are different characters regarding the folk tale and supernatural character is there. जैसे कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी देखें तो उसमें आपको शैतानी ताकतों को देखने का मौका मिलता है, वो क्या करती हैं, लेकिन उन्हीं शैतानी ताकतों को फिर से रोकने के लिए एक सुपरनैचुरल पर्सन आ जाती है, एक अपीयरनेस आ जाती है उसको रोकने के लिए, उसका डिफेंस करने के लिए, और वो एक्ट पे डिपेंड करता है कि कैसे एक्ट होते हैं, बिकॉज द स्टोरी इज बेस्ड ऑन काइंडनेस एक्ट. ओके, first one we read the text, then I just ask to all of you to please underline the difficult words by dictation and spelling test and vocabulary. Okay, and please make sure to use your sticky notepad. Okay, stick here and write the answer only once. Okay, and this is the other lesson answer your while reading the supernatural has been introduced in the story. Okay, what about the other questions? Level 1, level 2 and level 3. Okay, I share these all question answers one by one in your group. मैं इन ग्रुप में जैसे आपका जो काम है, जैसे रीडिंग टास्क आपका पूरा होगा तो इंशाल्लाह ताला साथ ही आप लोगों को जो आपके क्वेश्चन टास्क हैं उसके जो आंसर्स हैं वो शेयर कर देंगे. मैं क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लेता हूँ. वाई मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ. डिस्कस से मीन होता है कि अगर आपने पूरे टेक्स्ट को मेरे पढ़ा है, मैंने जो पढ़ा है आपको पढ़ाया है, एक्सप्लेन किया है, आपने इसको फिर खुद पढ़ना है. खुद पढ़ने के बाद आपने ड्राफ्टिंग पैड या अपना रफ रजिस्टर लगाने का मकसद ये नहीं है कि उसके ऊपर आप लोग अदर कोई एक्टिविटी करें. आप इस ड्राफ्ट के जो क्वेश्चंस आपको मिलते हैं उसको पहले खुद प्रायोरिटी दें. फर्स्ट वन प्रीफर योरसेल्फ, खुद को तरजीह दें कि हाउ यू आर कैपेबल टू फाइंड योर क्वेश्चंस आंसर बाय योर ओन सेल्फ. ठीक है, सेल्फ इंडिपेंडेंस ये होना चाहिए कि आप लोग पहले आंसर को खुद ढूंढें, रट्टा ना लगाएं. प्लस कंप्रीहेंशन अनसीन. आपको एग्जाम में भी, असेसमेंट में भी, क्लासेस में भी हम लोग बार बार यही कहते हैं कि पे फोकस ऑन रीडिंग and pay focus on reading targets. What about their targets? And please just find these questions answered by your own self. ये नहीं कि अगर आपको नहीं मिल रहा तो फॉरन नेट
ढूंढ लें, मीनिंग्स के लिए ढूंढें। मैंने आपको पहले कहा है कि if you feel a little bit difficulty regarding your words meaning, refer meaning, infer meaning, search meaning, thesaurus यूज करें, इंटरनेट पे जाएं, लेकिन लिंक्स खोलने से पहले सबसे पहले आप लोग पे खुद इतना एतमाद होना चाहिए कि आप आंसर को ढूंढ लें. ओके, in the level 1 question, why was New traveling to the capital? Very easy. Where did he stop? What time of year was it and what was it like? Description. Okay. What did New drink to keep himself warm? Okay. Question number 5. What two things did New do for the poor stranger? Okay. Who was the stranger? Level 2. How would you describe New? Use your own words. Description about New. About his appearance, about his personality, about his physical appearance, जो भी इसमें डिस्कस की गई है. How would you describe the stranger? On the second question, 8 number question, how would you describe the stranger? Use your own word. Use your own words mean please try to write these description structure by your own words. Their appearance, their face look like, their body look like, about their clothes, about their behavior, about their attitude, about their any good thing, about their any social thing, emotional thing. Question number 9. Can you explain why the stranger is presented this way? Question number 10. What did the stranger think of New? How do you know? Question number 11. What is the innkeeper like? Innkeeper जो इन को चलाने वाला होता है, ठीक है, innkeeper उसका लैंडलॉर्ड. How does he construct with New? किसी दोनों में उसने तजाज क्या किया? B part. Read the following text about predicting. Prediction को आपने रीड किया, ऑब्जर्वेशन को, प्रिडिक्शन को, कम्युनिकेशन को. ओके, आप लोगों ने ग्रेड 6 में साइंसेस में इंट्रोडक्शन टू साइंस में रीड किया हुआ प्रिडिक्शन के बारे में. प्रिडिक्टिंग है, प्रिडिक्ट से डिक्टिंग. What comes next in a story or narrative and answer the question given below. अब ये मैं टेक्स्ट पढ़ता हूँ और इसको आपने देखना है, इसके क्वेश्चंस क्या है, ये ग्रुप में हम लोग आपके साथ शेयर कर लेंगे. मेकिंग प्रिडिक्शंस. ओके, मेकिंग प्रिडिक्शंस और guessing clue by hint. Okay, what comes next can be tricky in a narrative. Okay, the writer will not give away too much because they want the reader to read further on, but there are often clues, hint that can help you to make judgment. You can easily find your answer through judgment. In addition, you will be able to draw on your own experiences of stories you have heard already. एक वही बात है कि अगर आपने इस कहानी जैसी या इससे रिलेटेड अपने ड्यूरिंग चाइल्डहुड में कभी आपको स्टोरीज पढ़ने का शौक है, कोई सिमिलर स्टोरीज पढ़ी है, तो उसका आपने अगर सुना है या पढ़ा है उन स्टोरीज को, तो एक्सपीरियंस है. फॉर एग्जाम्पल, थिंक अबाउट द प्योर knowledge we all have about fairy, okay, or a folktale. There are certain features specific to folktale. ये मैंने features आपको सारे explain कर दिए थे, उसको बार-बार बताने की जरूरत नहीं कि अगर आपको feel होता है कि आपने features को पढ़ना है, what about their features, what about their elements, what about their characters, what about their motive, just to go back on lecture number 1 and thoroughly read, listen what I deliver in this lesson, okay, lecture. A fairy or a folk tale. Now please highlight this PowerPoint. Involves magic and luck, same thing. Offers us good advice, good thing. Shows how good actions are rewarded and bad one punished. किसको reward मिलता है? By his own good act, and who got punished? किसको सजा मिलती है? Focuses on surviving in a difficult world. It's a good thing. Okay, it's a level 3 which I read, and how can this proceed? Question number 12. Predict comes next in the story. Comes in the next story. The 3 precious packets. Some tips are given below for your help. Use clues from the story. One by one, take a help from the necessary from clue. Use your prior knowledge for traditional fairy or a folk tale. Okay. And number 3. Copy out the writing frame. Writing structure in frame. On the next page, target page here. On page number 24. Okay, it to help you explain why you made the prediction, why you are capable to make the prediction by your own self, and use it a guide and adapt it as you need to. Okay, on the next page, please
मैं आपको समझाता हूँ. Please watch here. When I read from the name of story, I had some idea about. These are the basic structures which can you write on one by one by using these clues. For example, as a necessary example, and also addition of add. But I decided that. What about your decision? My reasons for the choice are firstly. Here's come conjunctions in sequence. My reasons or a cause वजूहात for this choice. मैंने जो story को लिया, इसकी choice को लिया, और firstly, okay. Then we suggest. What about the suggestion? Okay. Secondly, what we done in the middle. In secondly, because what we done, what be happening, and finally, what about the result? What about the moral? What about the answer? What about the final answer or a conclusion? Okay, this is your self-writing task. Self-writing task. I ask to all of you. You are all a good listener. You all my students, my dear students. You are good listeners, readers too. Okay, many students are very good reader. आप में से बहुत सारे बच्चों को रीडिंग का शौक होगा. उन्हें डिफरेंट स्टोरीज को पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो इन डिफरेंट स्टोरीज को वन बाय वन डिफरेंट अदर नेट के थ्रू सर्च कर लें. नेट पे बहुत अच्छी स्टोरीज हैं. अगर आप लोग लेना चाहती हैं तो अच्छे बुक स्टॉल से आप लोग लें, वहाँ पर मिलती हैं. और उसके बाद आपने इस लेवल को जो मैंने आपको गाइड की है, और अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप लेक्चर नंबर 1 जो है इन द बिगिनिंग लेक्चर जो मेरा स्टार्ट है, फाइनल लेक्चर है, उसको आप देखें और मोटिव्स को सर्च करें. अगर आपको वहाँ से क्लियर हेल्प नहीं मिलता तो आपके रिसोर्स पैक में उसके क्लूज, उसके हिंट मौजूद हैं, और वहाँ भी स्टोरीज हैं. अगर आप उनको पढ़ के हेल्प लेना चाहते हैं, वेल एंड गुड. अगर आपने खुद से कोई लिसन की है, हेयर की है, रीड की है तो लिखें. आज का काम इतना ही है. रीडिंग रिगार्डिंग योर टेक्स्ट वेरी केयरफुली. Okay, preparation for the dictation words on your rough drafting pad or a rough register, and also make sure to define these words difficult meanings in English meanings, in infer meanings, in reference meaning, and in Urdu meaning too. And most important thing, how to prepare the dictation words. Okay, and make sure to at least 15 words in capable, in very informative, in very good structure based sentences too. Okay, because sentence structure is the most important part in your exams, in your class test, and in your exams, in your class test, and in your assessment too. Okay, and stay at home. अपने पेरेंट्स को एट टाइम वही कि आपने तंग नहीं करना, घर में रहना है, बिल्कुल नहीं सताना, और कोशिश करनी है कि आपने अपने काम को खुद करना है. और मेरी ये पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है, इट्स माई हम्बली रिक्वेस्ट टू माई डियर पेरेंट्स टू, कि आप लोग अपने बच्चे को अगर घर में देख रहे हैं, असेस कर रहे हैं, तो उनको नेसेसरी गाइड जरूर करें अबाउट देयर लेक्चर, अबाउट देयर वर्क, अबाउट देयर लेक्चर जैसे हम उनको डिलीवर करते हैं, उसके क्या टारगेट्स होते हैं, बल्कि आप खुद भी सुने. और उसके बाद वही टारगेट्स अगर आपके बच्चों को समझ आ जाते हैं, वेल एंड गुड. अगर उन्हें कोई लिटिल बिट डिफिकल्टी होती है तो आप उन्हें ज़रूर गाइड करें. उनकी क्लास वर्क असाइनमेंट जो हम उनको इस वक्त डिलीवर कर रहे हैं, वो नोटबुक पे अगर लिख रहे हैं तो मेक श्योर करें वो नीट काम करें. बार बार मैंने कहा यूज़ योर ओनली ब्लैक पॉइंटर फॉर योर क्वेश्चन हेडिंग and blue ink pen. Yet I'm talking about blue ink pen for expression writing, your questions answer writing. Okay, and take proper distance between the words. Take proper gap between the next word. Legible handwritings जो होती हैं वो बहुत negative impression देती हैं. Okay, goodbye and take care of yourself. God bless you all of you. खुदा हाफिज़.